Hey everyone, a very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. आज एक और बहुत ही बढ़िया सा एपिसोड लाया हूँ आपको पेश करने जा रहा हूँ. Today we are dealing with a very I wouldn't say it's a novel concept, but it's something that we are hearing a lot about, but most of us don't really understand a whole lot about. Today we are going to be talking about factor investing, and for that we have one of the best guys when it comes to factor investing. We have with us today Siddharth Srivastava, who is the head of products ETF for Mirae Asset Mutual Fund. So, Siddharth, a very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. Siddharth, can you hear us? Okay. I guess there's a technical snag, so probably we'll have to wait just for a second. Yeah, Siddharth, can you hear me? Am I clear? Siddharth, am I audible? Okay, just a moment. Siddharth, can you hear me? Yeah. Am I back now? Yeah. You are back now. Yeah, I can hear you. Perfect. Okay. Okay, great. Sorry about that. I think internet is funny at times, right? We were chatting for 15 minutes, everything was going smoothly, and now as soon as we go live, my internet is off. That's okay. I feel we all have learned to live with it. I feel this is amongst the underrated things that the pandemic taught us, to live with shitty internet and yet continue about with life. Go on with life. So Siddharth, let's get let's cut to the chase. Let's talk about factor investing. So बहुत ही basic सा सवाल, elementary सा सवाल, but on behalf of investors and myself as well, I'd like to ask कि factor investing होता क्या है? Explain it to me like I'm a kid, which I am, but try explaining it to me and explain how simple. So मैं बहुत एकदम स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, ठीक है? सबसे पहले एक्टिव इन्वेस्टिंग थी, जहाँ पे फंड मैनेजर्स स्टॉक पिक करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस रीजंस. इसकी बेटर ग्रोथ होने वाली है, या फिर ये सस्ते में अवेलेबल है, ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये कंपनी अच्छी लग रही है, एक्सेट्रा. उसके बाद पैसिव फंड्स आए, राइट? पैसिव फंड वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन market cap based indices. The idea was that in the long run, after cost, active funds are not able to outperform the market. So rather than trying to identify the best active fund, which may or may not outperform the market in the long run, मैं क्यों ना एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट करूं जो कि सिंपली ये मार्केट कैप बेस्ड इंडिसेस को रेप्लिकेट करता है. मार्केट कैप बेस्ड इंडिसेस क्या होते हैं? यू आर पिकिंग कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप, and you are also having allocation to each of the companies based on market cap. Correct. अगर आप निफ्टी 100 की बात करो तो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, मार्केट कैप के बेसिस पे उनका चुनाव होता है, एंड वेटेज भी जो मिलता है वो रिलायंस का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिलायंस का वेटेज ज्यादा है. उसके एचडीएफसी क्यों है? कि एचडीएफसी का सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है. तो उस बेसिस पे ये मार्केट कैप बेस्ड इंडिसेस बनते हैं. ये आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर्स, थीम्स, बैंक ले लो, कंज्यूमर ले लो, किसी में से बन सकता है. राइट? यू आर पिकिंग टॉप कंपनीज वेइंग एज पर देयर मार्केट कैप. तो सबसे पहले पैसिव फंड्स यहाँ से शुरू हुए कि मैं एक सेगमेंट को फॉलो करूंगा जहाँ पे इंडेक्सेस बने हुए, सिलेक्शन एंड वेइंग इज बेस्ड ऑन मार्केट कैप, एंड दिस वाज गोइंग वेल. And this is also going well, right? Nifty 50 is outperforming so many large cap funds. We keep hearing about it all the time. This entire debate around सारा कुछ passive में shift कर दो, active का कोई point है. I think after a lot of politics, active versus passive is the most talked about topic. ये चल रहा था S&P 500, Nifty 50, Nifty 100, and we all know about it. But फिर क्या हुआ? Then people started getting bored, okay, in passive business side also, and decide कुछ नया करना चाहिए. ठीक है? नया क्या करना चाहिए यार? Why should we always pick companies based on market cap, assign weightages, invest based on market cap? क्यों नहीं मैं इसमें कुछ नया scientific चीज लाऊं and make it a bit different, right? Optimize and different क्यों? Probably. Sorry? In a quest to optimize it, to make it more efficient for return? I think optimize बोलना गलत होगा,
बिकॉज लोग क्या होते हैं ना, जब वी टॉक अबाउट फैक्टर इन्वेस्टिंग एंड स्मार्ट बीटा, पीपल थिंक कि यही स्मार्ट है, बाकी सब डम्ब है, बट ऐसा नहीं है, राइट? निफ्टी 50 एंड मार्केट गैप बेस्ड इंडिसेस आज भी उतने ही अच्छे हैं, करेक्ट, लेकिन करेक्ट, इनका क्या फोकस था कि मैं एक सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर टारगेट करूंगा, मेरा एक इंटेंट होगा ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। और यहाँ पे फैक्टर इन्वेस्टिंग का सॉर्ट्स ऑफ इंसेप्शन शुरू हुआ कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि एक्टिव फंड मैनेजर्स यूज करते हैं, राइट? देयर इज अ वेरी पॉपुलर फंड हाउस जो कि मोमेंटम स्ट्रेटजी बहुत फॉलो करता है, राइट? देयर इज अ फंड हाउस जो कि वैल्यू में बिलीव करता है। देन वी नो ग्लोबली देयर इज ग्रोथ एंड वैल्यू बहुत पॉपुलर है। कई लोग होते हैं जो कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड जो कि क्या बोलते हैं, यार भले रिटर्न बहुत ज्यादा ना आए लेकिन मेरा ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर बहुत मारता है अगर ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, राइट? सो दैट इज लो वॉलेटिलिटी। सो ये सब फैक्टर्स ना बहुत पहले से यूज हो रहे थे। तो क्या सोचा कि व्हाई नॉट ये फैक्टर्स उठाएं अलग अलग टाइप के, इसको रूल बेस्ड फ्रेमवर्क में, जो कि पैसिव का एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, उसमें डाले और एक इंडेक्स बेसिस पे रेप्लिकेट कर ले। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मोमेंटम का। सो यू नो, राइट, जैसे मैंने बोला कि मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग भी होती है, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको लो, जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं उसको बेचो। सो उसमें क्या हुआ, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सिंपली आइडेंटिफाई stocks which are giving good risk adjusted returns in last 3 month and 12 month period। तो पीरियड आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं मैं निफ्टी 100 से उन स्टॉक्स को चुनूंगा, ठीक है, मोमेंटम के बेसिस पे, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे दे रहे हैं। तो मैंने चुनाव किया मोमेंटम के बेसिस पे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे, एंड एंड में जो मैं वेइंग करूंगा उसमें भी मैं ऐसे इंक्लूड करूंगा, बिकॉज अगर विद इन निफ्टी 100 लेट्स से टाटा मोटर्स ज्यादा भाग रहा है, तो मैं चाहता हूं मेरे टाटा मोटर्स Siddharth, we lost you there. में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रहे, राइट? मैं अच्छा, क्यों चाहूंगा कि Siddharth, just a minute. I think we are losing you intermittently. Yeah. So, are you back? Is the connection restored? Okay. Let's just give you a minute there. Siddharth, am I audible? Are we in sync? No. Yeah, can you hear me now? Let me just give me a moment. I'll just change my internet connection itself. Give me a moment, please. Sure. I think that's the best option to do. Yeah. So, guys, we are right in the middle of a super exciting conversation with Siddharth, and as luck would have had it, this conversation, the internet connection decided to conk off at a very interesting juncture. Siddharth was just getting to the point where he started describing, momentum investing with some more depth and some great examples. But that's when the internet decided to take a break, or rather give each one of the viewers a break. So meanwhile, a quick recap for whatever has been discussed so far. We started talking about the inception of factor investing, and Siddharth just elaborated about how active funds then gave birth to passive, and then how we went ahead and started deciding on factors. And Siddharth, back to you. Can you hear us? Yes, Can you I hear can me? hear you. Yes. Yeah. So we lost you when you were at, right in the thick of an explanation, which was super interesting. So it was almost as if you left us on a cliffhanger. Ki agla season aayega tab batayenge. So we are so glad that we got reconnected. You were talking about Tata Motors, and you were giving that example about Yeah. Tata Motors. So I was talking about momentum. So Yeah. idea is कि मैंने choose किया कि whichever stock is giving me good risk adjusted returns, I have identified it. Out of Nifty 100, Tata Motor is one of the, let's say, 30 stocks which I have selected. So I also want Tata Motors to have higher weightages, right? Because if I'm investing in momentum based portfolio, a stock with higher momentum should have higher weightages.
So factor investing is all about focusing on these factors like momentum or low volatility or quality or value or growth, picking up companies based on these factors from a certain universe and weightage भी assign करना उन factors के basis पे, ताकि आप ना ही सिर्फ selection में factors को target कर रहे हो but weighing में भी tilt कर रहे हो, जहाँ पे better performance है factors पे वहाँ पे ज़्यादा focus होना चाहिए. So this is how smart beta was envisaged. Again, the idea is that आप एक certain behavior target कर रहे हो, जो भी एक factor से associated होता है, instead of getting a market based returns, which is again I'm saying a good strategy that should be your core portfolio, which is given by products like a Nifty 50 or a Nifty 100 or S&P 500. Right. So Siddharth, one very interesting thing now, from your explanation, I want to dig a little bit more into the concept of factor investing. You said there are a variety of factors, right? जैसे growth हो गया, value हो गया, आपका low volatility हो गया, momentum हो गया, ऐसे कई सारे factors है. और आपने हल्का सा एक insight दे दिया कि अगर momentum investing अगर build होता है तो किस thought process से build होता है, right? So we wanted to get a little bit deeper into, अगर मान लीजिए as a fund house, right? When you build a portfolio basis factor investing principles, what goes through your mind while building such a portfolio? What is your process? In fact, let's take an example, right? So it will be better to illustrate. Abhi, as we speak, I guess आपका low volatility fund is in the NFO period, right? As we speak. एंड NFO पीरियड में मतलब आपने बहुत ही रिसेंटली और फ्रेशली बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए ही होंगे टू अंडरस्टैंड द फैक्टर अ होल लॉट बेटर. So why don't you just give us some insights into what is the method, what is the framework, how was this constructed, and does low volatility as a factor, is it really trying to only reduce volatility, or how does it work? So सबसे पहले समझने की जरूरत है कि unlike a beta product, जैसे कि Nifty 50 I can suggest to any client who wants to take exposure in equity, right? Nifty 50 has the capability of being in the core portfolio of any investor, right? Correct. फैक्टर में मैं वो नहीं कर सकता हूँ. तो फैक्टर बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे निर्भर करती है, एंड प्रोबब्ली विल टॉक अबाउट फैक्टर बिहेवियर लेटर. सो आइडिया ये नहीं है कि मैं बेस्ट फैक्टर आइडेंटिफाई करूं. आइडिया ये है कि मेरे पास एज अ म्यूचुअल फंड हाउस आई शुड प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स. Low vol can be suitable for an investor A, momentum can be suitable for investor B, and vice versa may or may not be true, right? So idea first of all are these skills, and as long as product as till then I'm okay. So reason why we are launching low vol, Nirav, is basically because first of all I feel the timing is right because the market is going in too much turmoil. So there is a lot of headwinds. So low vol has a better connect because people are cautious about market volatility right now. So low vol as a product as a factor is something which works well during times of market turmoil. जब bear market होता है, tends to fall less. If you look at history also, it has fallen less in bear markets. But having said that, it performs relatively less in bull market. So it is a bit cyclical, right? But on the long run, अगर आप देखो, if you are falling less, then अगर आप 3-4 cycles में if you are falling less, then and that is what we have seen in low vol, कि आप long term में आपको वो alpha generate कर देते हो because you are able to navigate these bear markets in a more robust manner, while you may or may not get higher returns during bull markets compared to a momentum strategy. Our focus is solely to identify the best index. We feel Nifty 100 out of large cap, low vol is a better strategy than out of a mid cap or a small cap, because anyone who is focusing on low vol is a risk averse investor, right? Correct. Risk averse investor matlab
he'll probably prefer to stay invested in a large cap category. So depends. अगर मैं momentum सोच रहा होता तो I would have love to have mid cap also in my portfolio, because momentum investors will love to have more and more mid caps in the portfolio. So, but in the low vol, we are focusing more on the large cap space, and that's why the portfolio is out of large cap stocks and top 30 securities based on low volatility. Absolutely. I feel that's amazing the way the product is constructed. But this now leads me to two more questions. So, आपने कहा कि, जब आप लोवल की बात कर रहे थे, तब आपने ये कहा था कि, एक होता है जो फैक्टर बिहेवियर वाला जो रिलेशनशिप होता है, which I take has a lot to do with the investor from an investor standpoint. राइट कि इन्वेस्टर की क्या रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टर की क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम अ सर्टेन पोर्टफोलियो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही चूजेस अ फैक्टर स्टाइल. आपने साथ ही साथ एक हल्का सा एक मेंशन भी किया कि ऐसे समय में जहाँ पे बहुत ही जब भी टर्बुलेंस होता है मार्केट में, एनहांस्ड वोलेटिलिटी होती है, एंड तभी जो रिस्क अवर्स टाइप के इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक लो वोलेटिलिटी काइंड ऑफ जो फैक्टर होती है काफी अच्छा एक कुशन दे देते हैं पोर्टफोलियो को, राइट? So I realized that there are two perspectives with which one could probably go about selecting a suitable factor. One is time related thing, and by time I don't mean timing the market, but market का कैसा समय चल रहा है, is it really turbulent, is it choppy, sideways, structural? So timing it from that broader aspect. And the other is for very long term investors who want to allocate, which is basis their investor profile. So can you help us understand with a few examples कि for instance कैसे टाइप के मार्केट में कैसे टाइप का फैक्टर, so that is the first part of the question, we'll get to behavior and objectives later, but मार्केट पर्सपेक्टिव से कि कैसे मार्केट्स में कैसे फैक्टर इन मोस्ट केसेस आइडियल होता है. जैसे आपने हल्का सा कहा कि टर्बुलेंट होता है तब लो वॉल रियली हेल्प्स, तो ऐसा आपके हिसाब से what typical market characteristics के time पे what typical factors really match up well, and in the current situation what kind of a factor do you think will really play well? Yeah, so I think that's a very good question, and actually the answer is in name itself. So Yeah. there's no rocket science, because if you look at the names in a strategy like quality, low volatility. So quality में people pick up companies on factors like कि कौन सी company ज़्यादा profitable है, किसका leverage कम है, which is more stable in terms of earnings. So that is how quality is defined. You're picking companies based on these three parameters. So But quality isn't is one. quality evergreen? वो तो हम सभी को ऐसे ही कंपनी चाहिए, right? सबको चाहिए. The idea is to be disciplined and then keep on picking companies, because it is very easy to deviate also, right? And that is what factor brings. Correct. अगर आज Correct. आपका fund, I don't want to take a group's name, but there are companies which are giving very good returns, and maybe it is not a quality company, but Correct. at times fund manager can say that let me invest in Yeah. those set of companies because I need to improve my fund performance, etc., etc. Yeah. But you don't have that option in a Factor. passive fund, right? But So that is discipline, why. I feel an underrated attribute that you just mentioned, discipline. I feel that's a very underrated attribute of such strategies. Please go on. Correct. So quality, low volatility works very well in turbulent markets. Why it works well? Because the drawdown is lower. It's not as if the market negative 20% return दे रहा है तो quality और volatility आपको plus 10% return दे रही है. It will give you minus 10% return. So relatively it is falling less by 10%. But these factors doesn't rise as much in the bull market. So they perform, but अगर market अगर आपका plus 30% है, so unlike a momentum which outperforms market typically by 10-20%, यहाँ पे ये वो नहीं होने वाला है. So it's more, let's say, stable, both in terms of not falling down too much and not being exceptionally high when there's a bull market. So this is what quality and low vol does, and इन्हें नाम से ही पता चल जाता है इसमें तो. Right. Momentum, on the other hand, performs relatively very well in bull market. It's all about picking stocks which are doing well, right? So there's no
great science involved, but again, it's discipline. You're picking stocks which are doing well in last 3 month and 12-month period, and it typically does well in bull market, but it falls more in bear market. So that's why it's more cyclical, choppy in sensitive. terms of performance. It's more cyclical, much more cyclical. Factors like value does well in recovery market, like what we have seen in post-COVID. Value had Yeah, a phenomenal run, right? It did really well after correct. GFC also, global financial Yeah. crisis also. So it works well in recovery market, and value is again very cyclical. It tends to have years of underperformance, and when it does well, it does well. And dividend yield, which is not so popular in India because people are chasing price returns more, but in globally at least, for example, in these markets, when you expect markets to be sideways, people invest in dividend yielding based products because what dividend income थोड़ी ज्यादा होती है, एंड जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो Correct. मार्केट लो सिंगल डिजिट में रिटर्न देगा तो वो डिविडेंड यील्ड के रिटर्न्स सिग्निफिकेंट हो जाते Correct. हैं कंपैरेटिवली. सो उस टाइम पे डिविडेंड यील्ड चलता है. सो लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स आर सिक्लिकल. फॉर एग्जांपल, एज आई मेंशन, मोमेंटम इज high reward, high risk. Quality and low vol is more robust. It won't give you phenomenal returns, but if you look from a long term point of view, it has given much. It not I'll not say much, but it has given better returns than a Nifty 50 or a Nifty 100. Because as I mentioned earlier, अगर आप कम गिर रहे हो Correct. consistently, Correct. then वो long term में आपको दिखाई देता है. Whereas value is again cyclical. It tends to perform well. So investor has to be very cautious. It can invest in these funds from a long term point of view, I feel, especially volatility and quality. They can invest from a long term point of view. In momentum and value, they have to be more cautious about the entry levels. For example, when a few months back, if you are entering at a very high market in momentum, etc., your experience will not be nice when there's a correction, right? It can have a sharp drop. So momentum में थोड़ी सी timing important है, same as value I feel, but in quality and low vol you can, let's say, less prone to a bad entry point. Correct. I was just gonna get to that because आपने कहा कि कुछ specific phases of market में कुछ specific factors बहुत अच्छे से perform कर जाता है. But I speak as an investor myself and on behalf of many fresh investors. हमें यही तो नहीं पकड़ में आता कि मार्केट अब किस फेज में है, राइट? कि ये तेजी है या मंदी है, वो तो केवल हाइंडसाइट में पता चलता है काफी इन्वेस्टरों को. ऑब्वियसली for the professionals who are doing this day in and out, it is pretty evident. But many investors find themselves confused कि ये जो चल रहा है ये is it तेजी, is it मंदी? तो how should an investor go about allocating a factor based fund in their portfolio, right? So should it be behavior based कि अगर आप थोड़ा risk appetite आपका ज्यादा है तो चाहे जो भी हो लॉन्गर टर्म के लिए हो तो ले लीजिए मोमेंटम, या आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो ले लीजिए लो वॉलेटिलिटी. इज दैट the approach, or should they really try and figure a way to entry and exit this? How should an investor allocate to any factor? उसके लिए क्या starting point है? That's a brilliant question, $1 million question, I guess, Nirav. So see, first of all, again, a core product is simple product, Yeah. Nifty Yeah. 50, Nifty 100. So at no point you should build your core only based on exotic products, right? Correct. These smart beta products can be part of your satellite portfolio from a Yeah. long-term point of view, and if you are smart enough, and if you sorry, I should not say smart enough, but if you're following market on a daily basis and into the markets on a regular basis, then you can think about taking these tactical calls, because then you have to be aware about what are the valuations, where is the market heading, it is a choppy market, what sort of headwinds are there, tailwinds are there, etc. ठीक है. सो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. देखो लॉन्ग टर्म में आई से कि अगर आपको 5-10% एलोकेशन करना है, तो अगर आप थोड़े रिस्क एवर्स हो तो लो वॉलेटिलिटी या क्वालिटी मेक्स सेंस, और अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो मोमेंटम मेक्स सेंस जब
मार्केट के पीक पे नहीं, थोड़ा वैल्यूएशन का ध्यान रखना जरूरी है इन्वेस्ट से। सो अगर मार्केट डाउन है तब थोड़ा एंट्री करिए, बेहतर रहेगा। सो आप आपके उस पर डिपेंड करेगा कि अगेन बट 5 से 10% डोंट मेक इट अ कोर पोर्टफोलियो। टैक्टिकली आई विल से कि यू हैव टू बी वेरी मच, if you're investing in momentum you have to track valuations also। एक पॉइंट के बाद देखो, nobody can say कि this, I know this is the bottom of the market or this is the peak of the market, but if you're investing in momentum from a tactical point of view, अगर आपको लग रहा है रिकवरी मार्केट आने वाला है एंड वैल्यूएशंस आर स्टिल ओके, मैं राउंड अबाउट एवरेज पीई पे चल रहा हूँ, देन यू कैन गो फॉर मोमेंटम। इन लास्ट 3 month और 6 month पीरियड वी ऑल सॉ दैट बहुत सारे हेडविंड्स है, बहुत सारे इश्यूज मार्केट में है, राइट, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। देन आई फील दैट ये मार्केट जो है वो टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लो वॉल के लिए काफी अच्छा है। शॉर्ट तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस अगर टैक्टिकल कॉल ले रहे हो तो किस क्या एंट्री पॉइंट पे ले रहे हो। मोमेंटम के लिए आपकी अलग सोच होगी, लो वॉल के लिए आपकी अलग सोच होगी। आपको थोड़ा बहुत मार्केट को ऑन अ डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे थोड़ा देखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टेक दिस टैक्टिकल कॉल। बिकॉज I'll say last year there was significant inflow in momentum also and low vol also. People who invested in low vol must have been happy क्योंकि लो वॉल मार्केट से कम करेक्ट हुआ है, लेकिन जिन्होंने मोमेंटम में इन्वेस्ट किया है एट हायर वैल्यूएशंस उनका मे बी शायद एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज इट हैज फॉलन मोर इन दीज मार्केट्स। Right, absolutely. So Siddharth, you have been leading ETF products for Mirae, and you have been at the forefront during this entire surge in passive investing, and also, I feel probably आपके सामने ही ये जो smart beta products है, most of them that are today operating in India, आपके सामने ही चालू हुए हैं. You have seen all of these grow, and the space still growing, right? And as a manufacturer, from a manufacturing perspective also, you are closely looking at it. आपके हिसाब से आपने काफी इन्वेस्टर्स को भी देखे होंगे, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स हर बार कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू probably smart beta products कि this some mistake that is very common, very basic, but yet they repeat it probably just to the lack of a clear perspective they make this mistake। ऐसा ऐसे कौन सी गलतियां जो इन्वेस्टर्स करते हैं जिसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को आगाह करना चाहते हो? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है एक जागरूकता होने की, राइट, एंड एक समझ होने की कि मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एंड मैं जिस स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है, राइट। अगर मैं रिस्क अवर्स हूं तो मैं मोमेंटम में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं सिर्फ और मैं अगर रिस्क टेकर हूं और मुझे अच्छे ही रिटर्न्स पे ध्यान देना है और मेरा ऑब्जेक्टिव ही मार्केट को आउट परफॉर्म करना है तो फिर मैं लो वॉलेटिलिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, राइट। अगर मुझे ब्रॉड मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करके वो सिक्लिकलिटी का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो पहली बात है कि आपको बहुत ही जानना है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कंसर्न स्मार्ट बीटा उसको मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। देन आपको समझना चाहिए कि सी पैसिव इंडस्ट्री जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट्स इनोवेटिव तो हो रहे हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दे आर वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए क्रिएट किए हुए हैं। इट मे नॉट बी यूजफुल फॉर एवरीवन। सो हर्ड मेंटालिटी से बचना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सूटेबल है तभी करो एंड आप अगेन डिसाइड करो कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो फिर आपके लिए एंट्री पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन रिस्की प्रोडक्ट्स लाइक मोमेंटम जैसा मैंने बोला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो ये जान के देखिए कि ये प्रोडक्ट सिक्लिकल है। ये पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस आएगी तब आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि उसके बाद टिपिकली पीरियड्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस भी आएगी। सो इफ यू गेट ज्यादा इन गलत टाइम में आपने रिडेम्पशन कर लिया बिकॉज आप पहले ही डाउनफॉल में टेंशन में आ गए, देन जब
एक्चुअली में उस स्ट्रैटेजी में रुके रहना चाहिए, तब वो स्ट्रैटेजी में रुके नहीं है तो यू आर मेकिंग अ लॉस, राइट? Correct. सो प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट बीटा थोड़े से ट्रिकी हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर। दे आर मेंट टू डू अ सर्टेन जॉब एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उस पर्पस से अलाइंड है कि नहीं है। Right. In fact, the two biggest takeaways for me is, सबसे पहले, like with most other things in life, investors को इस चीज का भी जवाब मिल जाएगा if they look inwards and not outwards. It is most important that you understand your nature, कि आपका कितना रिस्क टॉलरेंस है, आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। उसके बाद आप प्रोडक्ट के तरफ ध्यान दीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके इन जो प्रीमाइसेस है इनके साथ अलाइन कर रहे हैं। डोंट जस्ट चेज समथिंग जस्ट बिकॉज आपका कोई प्रोडक्ट कोई हिस्टोरिकल रिटर्न्स बता रहा है जो काफी अच्छे दिख रहे हो, या आपके कोई दोस्त ने खरीद लिया। इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि आपका क्या प्रीमाइस है और ये कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके प्रीमाइस में सही से अलाइन हो जाता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम reiterating it for everyone's benefit, Siddharth mentioned towards the end, and I'm just giving it another spin, that the biggest risk, obviously equity investing, in fact almost every investing में risk होता ही है, but the biggest risk is the risk of ignorance, not understanding a product, not taking the efforts to understand the construct of a product is probably the biggest risk that you'll undertake while making an investment decision. So वो एक चीज से बचना बहुत जरूरी। So Siddharth, I feel those were really fantastic perspectives, and we have a lot many questions. In fact, live the questions hai, but we were taking questions even before the episode from people. So I'll just pick a couple of them right now. So the first question is that, is now a good time to buy value oriented funds considering recovery is yet ahead of us? I will probably not suggest go for value per se right now, depending on valuations. But if someone wants to do a staggered investment in value, then he or she can do it. We have seen a good run up in value already, right? So we immediate kitna satisfaction milne wala hai value investments, I don't know. But if you have a long term horizon, probably we can do a staggered investment at these times. But markets are choppy. If we end up seeing, अगर हमें ज़्यादा bear market मिलता है, recessionary conditions आती हैं, so उस time पे value tends to fall more. So be aware about recent आपके portfolio पे उससे क्या impact हो सकता है. But if you're looking for long term, then you can probably think about it, but not from a short term point of view. शायद काफी लोग आज भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख रहे हैं एंड कोरिलेशन कर, बट आई एब्सोल्युटली सी मेरिट। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड आपको एक छोटा सा एलोकेशन करना है, एसआईपी रन करना है लंबे समय तक, तो ठीक है थोड़ा बहुत एलोकेशन, बट लाइक सिद्धार्थ सेड, दिस इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट prudent tactical bet to take during such a climate. So, Siddharth, the next question is also a very interesting one. I feel हमें भी काफी सवाल आता है इसी subject पर, and I'm sure you also receive it. So the question is, when will international funds be available for investing? I hope somebody tell me the same on the good news side, but I don't know, frankly. We wanted to open up. We have multiple funds which जो कि close है इस Yeah. समय, and it's a very good buying opportunity in international markets. Yes. But sadly, I don't have any news of it opening really soon. But अगर कोई देख रहा है तो फिर there are some fund of funds which are still available, open for Mm. investments. Yeah. So he and she can explore those options, but it ज्यादातर फंड्स आपके बंद हैं, बट फंड ऑफ फंड्स कुछ खुले हुए हैं आपके, तो आप देख Right. सकते हैं। लिमिट कब बढ़ेगी, आई डोंट नो, इट्स अप टू आरबीआई। Yeah. So I feel this comes from, I can almost feel where is this coming from, कि सभी को लग रहा है अपॉर्चुनिटी बहुत सही है, and in fact they want to ask you because Mirae has such a great stack on the international side also. So guys, रुकना पड़ेगा, we'll have to wait and watch. There are alternatives, but keep watching, keep figuring, hopefully very soon, fingers crossed. So one last question, Siddharth.
Is low volatility allocation good even for aggressive investors? See, there's two ways to look at it. ठीक है, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर ऐसे देख रहे हो कि मैं 6 महीने में 10% से आउट परफॉर्म कर दूं, 20% से आउट परफॉर्म कर दूं, तो आंसर है नो. बट अगर तो आप देख रहे हो कि फिर तो मुझे लगता है प्रोडक्ट ही अभी अवेलेबल नहीं है ऐसा वाला ठीक है, तो। यस, बट लोग की इच्छाएं तो वैसी ही होती हैं. बट इफ यू लुकिंग कि मैं 5-7 साल में 2-3% कैगर ले आऊं, तो लो वॉल ने वैसा आउट परफॉर्मेंस दिया हुआ है निफ्टी 50, निफ्टी 100 के ऊपर. आप उस नजरिए से देख सकते हो. दूसरा नजरिया ये है कि जो ये पोर्टफोलियोज बनते हैं आपके स्मार्ट बीटा के, फ्रॉम अ सेक्टर एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट होते हैं. बिकॉज अगर आप लो वॉल का पोर्टफोलियो देखोगे, या फिर आप क्वालिटी का भी पोर्टफोलियो देखोगे, तो काफी डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ बायस्ड है. फॉर एग्जांपल, डिफेंसिव सेक्टर माने तो कंज्यूमर्स हुआ आपका, तो कंज्यूमर के ऊपर बहुत एलोकेशन है, आईटी के ऊपर एलोकेशन है ज्यादा, हेल्थ केयर के ऊपर एलोकेशन है. फॉर एग्जांपल, लो वॉल में आई थिंक बीएफएसआई का एक्सपोजर सिर्फ शायद 13-14% है कंपेयर टू बेंचमार्क जहाँ पे 35-40% एक्सपोजर है. सो वो एक आपको आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन भी लेकर के आता है फ्रॉम अ सेक्टर एंड अ स्टॉक एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जांपल, लो वॉल का टॉप स्टॉक इज नेस्ले एट 4.2%. आई डाउट किसी भी एक्टिव फंड या किसी भी ब्रॉड बेस्ड पैसिव फंड में ऐसा होगा. तो आप दोनों नजरिए से देख सकते हो. एक लॉन्ग टर्म में इट कैन ऐड अल्फा, and in a normal due course it can add that diversification from an exposure point of view in your portfolio. और कैन वी आल्सो कंसीडर कि टर्बुलेंट टाइम्स में आपका डाउनसाइड थोड़ा एब्जॉर्ब कर जाएगा, थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर वाला भी रोल प्ले कर सकता है इन करंट चॉपीनेस, राइट? Absolutely, because वो defensive industry का थोड़ा bias होता है, तो we have seen कि it has fallen less in these bear market scenarios. Absolutely. So wonderful interacting, Siddharth. I feel काफी brief समय के लिए बात किया, but we spoke about a variety of things. I don't know whether I call this an introduction to factor investing or an introduction to a master class in factor investing. I feel we need to do a much more in-depth series on factor investing and passive investing. We'll probably schedule it sometime. So, Siddharth, this has been a superbly insightful conversation. There was a lot for me to take away from this conversation personally, and I'm sure Baki Sahar viewer ke liye bhi is the same thing. So, thanks a lot for taking the time and also sharing such amazing perspectives and laying it out really in such an easy to consume format for us, with almost, hardly any jargon. So I feel the only jargon that we used is factor investing. I feel that's the highest level of jargon that was used. So you really laid it out in a simple fashion. So thanks for that. It really helped. Thank you so much, Nirav, for having me here. Thank you, Siddharth. Good day.